I know there are many women out there जिनको footwear से थोड़ा सा issue हो जाता है and they want to have certain footwear जो हर चीज के साथ जम जाए. I know it is a confusing thing to find that perfect pair which goes with your Indian wear, Western wear, and anything you wear. I'm Abhinya Menon, your personal stylist, image consultant, and I'm here to tackle that problem with you for you. तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ऐसे कौन से 4-5 स्टाइल्स हैं फुटवेयर के विच इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट योर इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, इंडो वेस्टर्न एंड एवरीथिंग. Think that this problem is sorted. Number one and the most amazing. Okay, let me check my hair. It's okay, it's fine. And yes, please comment how is this outfit looking with this turquoise earring. Do you think ये दोनों color match करता है? If yes, you can drop down in comments. And what is your favorite color combination, if I may ask? से important एक चीज आपको समझनी है कि फुटवेयर आपकी बॉडी का सारा लोड लेती है, तो प्लीज इन्वेस्ट इन क्वालिटी फुटवेयर. फुटवेयर में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि इट इज टू एक्सपेंसिव. और ये अगर आपका फुटवेयर थोड़ा सा भी एक्सपेंसिव होगा, थिंक अबाउट द टाइम कि आप उसको कितनी बार पहनते हो, उसका कितना रफ यूज होता है, किस गड्ढों से चलते हो, रास्तों से चलते हो, आपका बॉडी वेट होता है, कभी कभी आप दौड़ते हो, कभी स्पीड में वॉक करते हो. सो फुटवेयर टेक्स अ लॉट ऑफ लोड. Investing in a good pair of footwear is going to last you long rather than आप ऐसे फुटवेयर में इन्वेस्ट करो जो 4 बार पहना टूट जाए. So you have to understand cost per wear of any outfit which you are trying to buy. So that is that. Some styles which are really important for all the women who work in corporate industry or who work as a teacher, professor, जिनको काफी टाइम खड़े रहना पड़ता है. I will say rather than wearing shoes, आपके पास अभी ये सारे स्टाइल्स हैं देखने को. नंबर 1, राउंड टो बेलीज. सो जो राउंड टो बेलीज होते हैं, द पिक्चर्स विल बी हियर, दे कॉम्प्लीमेंट योर सलवार कमीज, स्कर्ट्स, जीन्स, सूट्स, एवरीथिंग, एंड ये बहुत अच्छा लगता है. तो यू कैन गो विथ समथिंग प्लेन, यू कैन गो विथ फ्लैट, और यू कैन एड 1 inch heel. इट इज गोइंग टू लुक ग्रेट. कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ अंडर ड्रेस्ड हो, क्योंकि ये इस टाइप की बेलीज काफी हद तक हमें एनहांस करती है, हमारे हाइट को, हमारे बॉडी को. सो यू कैन गो विद दीज. Number 2 are pointed toe heels. Pointed toe heels are super fancy, super elegant and classy. Usually आप इसको अपने parties में भी पहन सकते हो, and ये बहुत ज़्यादा elegant लगता है. Personally, I love pointed toe heels and और flats. मेरे पास सारे वैसे ही हैं, and वो आपके daily wear को काफ़ी हद तक एक oomph देता है, एक enhancement देता है. आप एक normal t-shirt और jeans पहन लो और उसके साथ एक pointy toes flats या heel पहन लो, suddenly the whole outfit is going to shine. So this is something you can invest in. अगर आपको डेली चलना भी रहता है, आप फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो चप्पल टाइप ना हो, सामने से ओपन ना हो, एंड इट इज कंफर्टेबल येट क्लासी. एंड पॉइंटी टो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, सम पीपल हैव द प्रॉब्लम दैट पॉइंटी टो में हमारे जो लिटिल फिंगर होते हैं वो थोड़े हर्ट हो जाते हैं, नहीं चला जाता, तो आप स्क्वायर टो भी ले सकते हो. दैट इज इक्वली अकोमोडेटिंग एंड इट लुक्स chic as well. Point number 3, which is a versatile footwear which goes with everything, and that is your jutti. Indian juttis are super comfortable, super versatile. It goes with your jeans, it goes with your skirts, it goes with your salwar kameez, and it goes with साड़ीज एज वेल. जुत्ती के साथ एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज्यादा फ्लैट होती है, एंड सम पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल. सम पीपल हु हैव फ्लैट फुट आर नॉट कंफर्टेबल विद जुत्ती. सो आप जुत्ती डिच कर सकते हो, आप 1 inch वाले कुछ बेलीज ट्राई कर सकते हो. दे आर इक्वली अपीलिंग. Point number 4, or the option number 4, or a style number 4 for you guys, is block heels. Block heels are amazing for women who want to walk comfortably, and block heels give you the comfort कि आप काफी long hours तक खड़े रह सकते हो without having the pain in your feet. And block heels सब में compliment करता है. You can wear it and you are going to look great. अब block heel में आप ये कर सकते हो कि rather than opting for the thick straps, go for kolhapuri styles, go for that touring wala style, and that looks great. Please avoid thick straps. It makes your feet look super bulky and it adds a lot of weight to your overall look. Last but not the least, which are my personal favorite, and it's not necessary कि वो आपका हो, those are stilettos and strappy stilettos. I love stilettos because मैं
काफी हद तक यूज टू हूँ हील्स में चलने के लिए, एंड आई लव हील्स. आई रेयरली वेयर फ्लैट्स एंड दैट वर्क्स फॉर मी, but you can wear something which works for you. If flats is your comfort zone, then opt for something strappy, which is very thin strap and it looks great. But if you are a person who loves heel, just like me, then strappy stilettos are class apart and they look supremely elegant with everything you wear, be it dresses, be it saris, be it silwar kameez, it looks great. So next time आपको कभी भी confusion होगा, आप इनमें से select कर सकते हो. And for the sporty women out there, you can definitely invest in sleek sneakers. There is a thing, I have seen women who love shoes and who want to go with comfort, but there is always a rule that comfort can also be achieved in style. So उसके लिए क्या कर सकते हो, bulky shoes से better है आप sleek sneakers में invest करो, and वो बहुत stunning लगता है. It should be little sleek, it should be polished, उसका white maintain करके चले, ये नहीं कि आप dirty चीजें पहन रहे हैं, and your footwear and your style is going to look great. Last but not the least, few bonus points which are always there in my videos. Number 1, always clean your footwear when you come back home. So हमेशा अपने footwear को साफ करके उसको अपने पैकेट में डाल के वापस रखें. Just don't throw it here and there. Respect your footwear because it carries you places. Point number 2, अगर आप स्नीकर्स पहनते हैं, शूज पहनते हो, मेक श्योर आप एक दिन हफ्ते में निकालें और उसको अच्छे से वॉश करें, क्योंकि स्नीकर्स आर वाइट एंड एनी फुटवेयर विच इज ऑन द लाइटर शेड नीड्स टू बी क्लीन्ड. जब भी आप शूज खरीदने जाते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार 2 सेकंड के लिए पहन लिया एंड आपने उसको ले लिया. ट्राई टू वॉक अराउंड द मॉल. एटलीस्ट आप उस शॉप में थोड़े टाइम के लिए ज्यादा चल सकते हो. इससे आपको उसका कंफर्ट जोन समझ जाएगा, उसकी इलास्टिसिटी समझ आएगी, एंड हाउ मच कुशनिंग इज देयर इन द फुटवेयर, इट विल बी अंडरस्टूड. सो गिव इट टाइम and buy it. Like this video if it was helpful. Share it with people who would love to hear about it. I'm Abhinya Menon. I'm a personal stylist and an image consultant here to help you women to look your best and amazing. Follow me on Instagram for amazing content, and there we have a lot of workshops and programs for regular women like you, and you can enroll for that if you want to transform your style. I'm always there to help you out. I'll see you in my next video. Bye bye.